Hello and welcome to this new tutorial. Today we are starting a new series on democracy, and subsequently in my following tutorials I shall cover up the following aspects of democracy. First, we will try and understand the meaning of democracy, then definitions of democracy, followed by basic principle of democracy, then forms of democracy, size of democracy, kinds of democracy, and last we will discuss about the condition necessary for successful working of democracy. So this would be a framework of understanding the democracy in detail. So in this tutorial I shall talk about the first very important concept, that is the meaning of democracy. Well, the word democracy comes from two Greek words, that is demo, which means people, and kratos, which means rule. Therefore, the word means rule by the people, or sometimes it is called popular sovereignty, and can also be referred as to direct, participatory, and representative form of rule by the people. So this is in short what we talk about the meaning of democracy. So when we talk about the meaning of democracy, we have to understand that the word democracy is carried forward or carried from the two Greek words, that is demo, which means people, and krato means rule. And when we add these two words together, we have democracy, which means rule of the people. And therefore rule of the people can be sometime referred as popular sovereignty, or can also be learned as a direct participatory democracy, and can also be referred as a representative form of rule. Now what is popular sovereignty? Popular sovereignty is a concept where people are powerful. The power lies with the people. It is the people who will decide what sort of policies they want, what sort of rules and regulation they want to have in their own country. It is where the people are very, very powerful, because they are the one who holds the power in their hand. Similarly, it is also called direct participatory democracy. Now what does it mean, the direct participatory? That means here people play role directly into the system. Like in olden days we had Greek democracies where the population was small and people would be called together at one place, and people would directly participate in making of laws, in making of policies, and XYZ. And therefore democracy is rule of the people, wherein they have a direct participation. As well as it is also called representative form of rules, because today in modern time, because the populations are big, country size are big, you cannot have a one place where people can be called upon to discuss about certain issues. So today we have a different form. In today's form we elect our representative, and these representative will be sent into the assembly, and they will represent people directly. And therefore we have something called representative form of rule, which is again the rules and the powers lies with the people. So जब हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का जो वर्ड है डेमोक्रेसी, वो दो हिस्सों में बांटा गया है. और ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये ग्रीक सोसाइटी से या ग्रीक से लिया गया है. नाउ व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी मीन्स? डेमो मतलब लोग, और क्रेटो मीन्स रूल्स. दैट मीन्स लोगों का रूल, या पीपल्स डेमोक्रेसी और पीपल्स रूल. दैट मीन्स लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास पावर है. एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी इज नथिंग बट रूल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का सरकार. और सरकार बनाने के जो तरीका है, या सरकार बनाने का जो कानून है, वो लोगों के पास है. लोग, उसके सिटीजन्स विल डिसाइड कि कैसे सरकार चाहिए. इसीलिए डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बिन रेफर्ड एज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब
लोगों की सरकार, आम आदमी की सरकार, citizens will decide what sort of a government they want, what sort of rules they want, और उनके तरीके से लोगों के विचार लेने के बाद ही वो सरकार बनेगी। और इस सिस्टम में जो जनता होती है वो बहुत पावरफुल होती है क्योंकि उनके पास कानून होता है, बिकॉज दे विल डिसाइड what sort of a system they want. Similarly, democracy is also referred as direct participation, मतलब सीधा पार्टिसिपेशन, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, जनता डायरेक्टली वहाँ पर आएगी और अपना हक जमाएगी और डिसाइड करेगी क्या अच्छा है और क्या बुरा है उनके लिए। और ऐसी सरकार हमें ओल्ड ग्रीक सोसाइटीज़ में मिल चुकी है। वहाँ पर पॉपुलेशन कम था, इसलिए लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, इश्यूज़ यूज्ड टू गेट डिस्कस्ड और हर एक इश्यूज़ को डिस्कस करके वो अपना कानून बनाते थे। लेकिन आज की तारीख में बिकॉज़ पॉपुलेशन बड़ा है, स्टेट बड़ी है, डेमोग्राफी बड़ी है, टेरिटरी बड़ी है, पॉसिबल नहीं है लोगों को एक साथ लाके किसी भी इशू के ऊपर डिस्कस करें। और इसीलिए हमारे पास अभी नया सिस्टम है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ रूल, मतलब जनता अपना खुद एक सिटीजन्स को इलेक्ट करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी और वो रिप्रेजेंटेटिव बाद में वहाँ जाके ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ही विल पार्टिसिपेट in the formation of a rules and regulation for the people. So this is the in short what we talk about the meaning of democracy. Well, moving forward, following analysis uses a simple model of the key elements of democracy. That means following analysis will help us to understand that beside these aspects of democracy, these aspects of a meaning of a democracy, we have following 7 very important other areas where with the help of this point we can also understand the meaning of democracy. Point number 1, wherein we have citizen involvement in decision making. Yes, in every democracy you'll find that it is the citizens who are involved in decision making, either directly or indirectly. Directly we have seen in the ancient time, even today in some countries where people are directly involved into the decision making. Example, in Switzerland they have this system called referendum, they have this system called direct participation, where if a country needs to take certain decision they will ask citizens opinion about it, and accordingly that they will take the decision which is good for the society. So this is called citizens involvement in democracy or citizens involvement in decision making. And if at all, if citizens are not involved into the decision making, that cannot be a democracy. अगर जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर सिटीज़न इन्वॉल्व नहीं होता है कि कोई भी डिसीजन लेने में, उसका ओपिनियन अगर कभी भी लिया गया नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी में हमेशा लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, सिटीजन्स का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ हाउ द डेमोक्रेसी फंक्शंस. Second very important point is it is a system of representation. Yes, as we have spoken about earlier, democracy in today's world is nothing but a system of representation. We elect our own members for member of legislative assembly or sometime even for a member of parliament, and these members, once they get into the system, they will represent our issues, they will represent we as a people of the state or a society. They are supposed to raise the question and issues pertaining to the society and especially to that community from where they belongs to, especially to that constituency where people have voted him or her in power, so that he goes there and represent the opinion of the masses. और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है. जैसे मैंने बोला है, आज के तारीख में स्टेट इतनी बड़ी हो चुकी है, पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है. जहाँ पर भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो सकता है टू सम एक्सटेंट पॉसिबल है, लेकिन आज की तारीख में जैसे मैंने बोला पॉसिबल नहीं है. इसीलिए आज जनता अपना खुद का मेंबर
इलेक्ट करती है, और एक बार वो इलेक्ट होने के बाद दैट पर्सन जब वो असेंबली में पहुंचता है, भले वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, वहाँ पहुंचने के बाद उसको हमेशा जो इश्यूज़ है उन लोगों के, जो प्रॉब्लम्स है उन लोगों के, वो उसको वहाँ पर जाके रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि सिस्टम समझ सके कि कौन सी सोसाइटी में, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम है, और इसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाके सदन में रखेगा या असेंबली में रखेगा, और वहाँ से बाद में लॉज निकलेंगे, वहाँ से बाद में पॉलिसी हो सकती है. सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और अ सिंपल मॉडल ऑफ democracy. Next we have rule of the law. Very simple, that in democracy everything functions according to the rule of the law. Democracy cannot function in the air. Democracy cannot be a choice of a one man. Democracy has certain set of rules, and according to the rules the state, society, institution must functions. Because why those rules are very important? Because rules means peace in the society. Rules means the business has to be carried out accordingly, without hurting anyone's sentiments, without disturbing anyone's liberty for that matter, and therefore rules are very very important. अगर उस सोसाइटी में या स्टेट में अगर कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. डेमोक्रेसी में सबको अपने अधिकार दिए गए हैं, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स है, सबको अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसके अलावा भी सबको अपनी ड्यूटियाँ दी गई हैं, और सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल होना बहुत है. सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते हैं, अकॉर्डिंगली इट हैज़ टू बी कैरीड आउट. और अगर कोई भी सरकार रूल बुक फॉलो नहीं करती है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है. सो इसीलिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिंपल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द लॉ. नेक्स्ट वी हैव इज an electoral system where majority rules. Very important. In democracy we always find that it is a majority which rules the society, which rules the system, which rules the state. Now when we talk about majority rules, it does not mean majority of a population or majority of any class or a society. No, it is basically talking about that once we conduct election, whichever party gets the majority votes, whichever party gets the majority seat in the assembly, that party is supposed to form the government. And again, very important, it does not mean that majority rules over the minority. The real democracy is when majority takes the opinion of the minorities. And when I'm talking about minority, I'm directly talking about the opposition party. Majority rulers, the government of the day, must take the minority, that is opposition, into confidence, so that end of the day whatever decisions have been taken, whatever policies has to be implemented, it has to benefit the largest section of the society. It must benefit every last person of the society, and it is all depends on electoral system which has been put up in a place for, let's say, 4 years or let's say 5 years. That means every after 4 years or every after 5 years there would be a fresh election, and again people will decide which party or which group of parties will form the government. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डेमोक्रेसी को हाईलाइट करता है, वो है अपना इलेक्टोरल सिस्टम. और इलेक्टोरल सिस्टम में एक ऐसी बात है कि कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसको भी मेजॉरिटी मिलता है वो अपनी सरकार बनाएगा. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, जब कोई भी पार्टी अपना सरकार बनाती है, व्हेन दे गेट मेजॉरिटी सीट्स, इट डज नॉट मीन दैट दे हैव द फुल फ्लेज पावर. नो, the real democracy is that majority party, majority government must work in accordance and with cooperation from the minority, that is opposition party. उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. अगर कोई भी पार्टी ओपोजिशन में है, उसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने उसको एकदम फेंक दिया है या लोगों को वो नहीं चाहिए. It doesn't mean that. Even in opposition party, if they have 2 seats, 3 seats,
these 2-3 sets represent the people of that society. विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उस विचारों को एक साथ मिलाकर एक सरकार बनानी चाहती है, एक सरकार बननी चाहिए, ताकि कौन सा भी डिसीजन हो, कौन सा भी पॉलिसी मैटर्स हो, वो सबको एक बराबर देखे और वो सबको बेनिफिट करे। और इसीलिए इलेक्टोरल जो सिस्टम होता है 4 साल का हो सकता है या 5 साल का हो सकता है, एवरी 4 years, एवरी आफ्टर 5 years फ्रेश इलेक्शन होंगे और उस इलेक्शन में अगेन जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि कौन से पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी। एंड देयरफॉर इन डेमोक्रेसी it is a majority which rules the government with cooperation from the minority, that means from opposition party, because both majority and minority parties, or both ruling and opposition party, are the important element of electoral system of that particular state. Moving on, point number 5, some degree of equality among the citizens. Yes, very very important. In democracy we always have equality in the society. Sometimes it is difficult to have equality. We will have a lot of diverse culture altogether, we will have a lot of diverse system altogether, but democracy always gives you that some hope of a degree that there would be a equality among the citizens. And democracy does this with right to vote. When we talk about right to vote, every vote has one value, whether you are rich, whether you are poor, whether you have everything and or whether you have nothing. You may belong to any political party, you may belong to any profession, or you may follow any ideology. End of the day, your vote will have a one value, and this value will bring some kind of equality among all the citizens and all the voters, and this is possible only in democracy. So therefore equality is again very important concept associated with democracy. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी सही मायने में बहुत डिफ़िकल्ट है. वी कैनॉट हैव टोटल इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, वी विल डेफिनेटली हैव सम डिफरेंसेस, बट डेमोक्रेसी में आपका जो वोट है वो एक है, एंड दिस इज़ व्हाट ब्रिंग द इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. आप भले रिच हो या पुअर हो, आपके पास सब कुछ हो या आपके पास कुछ भी नहीं हो, आप भले किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप कौन से भी प्रोफेशंस को बिलोंग करते हो या आप कौन से भी आइडियोलॉजी फॉलो करते हो, लेकिन अंत में जब डेमोक्रेसी में इलेक्शन होगा तब हर एक इंसान का वोट होगा एक, उसका वैल्यू रहेगा एक. और विथ सम सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डेमोक्रेसी it brings some degree of equality among the citizen. At least जब उस दिन लोग मतदान के लिए लाइन में खड़े रहेंगे तब वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि हर एक सिटीजन्स का, हर एक वोटर का वैल्यू रहेगा एक वोट, उसका वैल्यू सिर्फ एक रहेगा, ना कि 2 और 4. दैट मीन्स एवरी वोटर विल हैव वन वोट, एंड दिस will bring some degree of equality among the citizen, and therefore equality is again very important aspects of democracy. Next we have is some degree of liberty or of freedom granted to or retained by citizens. Yes, democracy में हमेशा आपको आज़ादी मिलेगी. Democracy always gives you certain degree of liberty, it grants you certain freedom, and these liberty and freedom are again retained by citizens. In democracy, every citizens have certain amount of liberty, certain amount of freedom. In fact, fundamental rights are very very important, essential part of the citizens, and it is the citizens who will define, or it is the citizen who will enjoy this liberty and freedom. Nobody can take it away from them, but as I said, there are exceptional cases where state can curtail or suppress this liberty as well as freedom only on certain crises. But till then you enjoy some degree of liberty and some degree of freedom, and again, as I said, it is the citizens who control the democracy because they have the power to control the democracy. So
This is all about the meaning of democracy, and I hope you have understood the first aspects of democracy, that is the meaning of democracy. In next tutorial, we shall talk about the definitions of democracy. Till then, take care.